Hello friends, today we are going to take some examples on harmonic analysis. So first problem is obtain the constant term and the coefficient of first cosine and sine terms in the expansion of y from the table. Also find amplitude of first harmonic. So x and y given a x given a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and y given a 9, 18, 24, 28, 26, 20 and 9. So most important thing is here the value of m is number of sub intervals 1 2 3 4 5 6 7 but first and last value is same, so take m is equal to 6. This is very important. First and last value is same is repeated a, so the 6 is period here means 0 to 2l. And question you obtain the constant term of the obtain the constant term and the coefficient of first cosine and sine terms, means we have to find Fourier series up to first harmonic. This is very important. So here period is 6 means 2l is equal to 6 say, that is 0 to 6 interval है. So the value of l is 3. This is one way how to decide l. Or another way is use these notes. If problem is on full range series, then L is equal to number of observations upon 2, and if problem is on half range series, then L equal to number of observations. Okay. Now this problem is on full range series, means we want to find Fourier series up to first harmonic. We want to find sine series and cosine series both here. So L is equal to number of observations is 6 upon 2 is equal to 3. So how we write Fourier series up to first harmonic here, that is y equal to a0 y2 plus a1 cos pi x by l. So a1 cos pi x by 3, l is 3, plus b1 sin pi x by 3. So we have to find a0 a1 and b1. So a0 is 2 times summation of y upon m, here m is 6. Then a1 is 2 times summation of y into cos n pi x by l, but n is equal to 1. So 2 times summation of y into cos of pi x by 3 upon m, and b1 is equal to 2 times summation of y into sin pi x by 3 upon m. So for a0 a1 a b1, what we want first, find table here. So in table we have to find summation of y into cos pi x by 3, summation of y into sin pi x by 3. देखो now यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है मोड ऑफ योर कैलसी. आपका जो कैलकुलेटर है, अभी देखो कैलकुलेटर का मोड चाहिए रेडियन में, बिकॉज एक्स इज गिवन इन रेडियन 0 1 2 3 4 5 6. देखो फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑन हार्मोनिक एनालिसिस डिग्री मोड कब लेना है आपको, जब x की वैल्यू डिग्री में गिवन होती है. यदि x डिग्री में नहीं है, फॉर सॉल्विंग रिमेनिंग ऑल प्रॉब्लम्स use radian mode. So most important is convert your mode on radian, means calculator का mode radian पे करो. Okay, now we have to find a0 a1. So in table our first column is a x. Okay, x given here, what we want for a0 a1. Okay, so x value of x given is 0 1 2 3 4 5 6, but first and last value is repeated, so write x up to 5. So x 0 1 2 3 4 5, then write down respective value of y in front of x, that is 9 18 24, then 28, then 26, 20. Okay, then find pi x by 3, because for a1 and b1 we want angle pi x by 3, pi x by 3. So if you find pi x by 3 separately here, ये pi x by 3 फाइंड किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, डायरेक्ट ये दो कॉलम फाइंड किया तो भी चलेगा सब. सो pi x by 3 मीन्स देखो x की वैल्यू कैसे लेनी, इसके लिए ले रहा हूँ मैं, x इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट किया तो ये 0 आएगा. देन x इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर पाई बाई 3 आएगा, x इक्वल टू 2 के लिए 2 पाई बाई 3 आएगा, x इक्वल टू 3 के लिए 3 पाई बाई 3 आएगा, 4 पाई बाई 3 आएगा x इक्वल टू 4 के लिए,
एंड x इक्वल टू 5 के लिए 5 पाई/3 आएगा। ओके, ये हो गया πx/3 मीन्स x की हर वैल्यू लेनी है हमें। उसके बाद अभी y इंटू कॉस πx/3, तो ये जो πx/3 अभी आपका मोड रेडी है नहीं, सो कोसाइन में इसको पुट करो, cos 0 1 आएगा, 1 इंटू 9 इज 9, देन cos π/3 की जो भी वैल्यू आएगी उसको 18 ने मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 9 आएगा। cos 2π/3 फाइंड करो, उसको 24 ने मल्टीप्लाई करो, -12 आएगा। देन cos 3π/3 फाइंड करो, मल्टीप्लाई इट्स बाय 28, -28 मिलेगा। cos 4π/3 फाइंड करो, उसको 26 ने मल्टीप्लाई करो, -13 मिलेगा। cos 5π/3 फाइंड करो, उसको 20 ने मल्टीप्लाई करो, 10 मिलेगा। एंड राइट डाउन addition of this because we want summation of y cos πx/3. Then for b1, our next column is we want summation of y into sin πx/3. So here y into sin πx/3. So again πx/3 is this. So sin 0 is 0, 0 into 9 is 0 here. sin π/3 फाइंड करो, उसको 18 ने मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर लिखो। sin 2π/3 फाइंड करो, उसको 24 ने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखो। इन दिस वे फाइंड ऑल वैल्यूज, मल्टीप्लाई बाय y, right here and write its summation. Okay, now after getting this table, so this is the summation of y cos πx/3, y sin πx/3. Then a0 is 2 times summation of y by m is 6, is equal to 2 times summation of y. Summation of y is not find here, so if you find, suppose summation of y is something, because मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, अपॉन 6, इसका जो कैलकुलेशन करेंगे हम, ये वो मिलेगा 41.66। देन a1 इज 2 टाइम्स समेशन ऑफ y इंटू कॉस πx/3, इसकी वैल्यू -25 आई है, अपॉन 6 ने डिवाइड किया तो ये मिलेगा। एंड b1 इज 2 टाइम्स समेशन ऑफ -3.404 अपॉन 6 फाइंड किया तो ये मिलेगा। ओके, नाउ दिस इज a0 a1 b1, वी हैव टू पुट दिस a0 a1 b1 इन equation 1. This is equation 1. So that is the Fourier series up to first harmonic. So y is equal to a0 by 2 means 41/66 upon 2, 41/66 upon 2 plus a1 is -8.33 into cos of πx/3 plus b1 -1.15 into sine of πx/3. So this is the Fourier series up to first harmonic. Additional question is also find amplitude of first harmonic. So how we find amplitude of first harmonic can be written as under root of a1 square plus b1 square is equal to under root of a1, value of a1 is -8.33 its square plus b1 is -1.15 square. So after simplification, this is the amplitude of first harmonic. Okay, so next problem is obtain the first two coefficients in Fourier cosine series for y x, say using this x0 1 2 3 4 5 and y given a 4 8 15 7 6 2. So here half range cosine series, if I read problem carefully, obtain the first two coefficients in the Fourier cosine series. This problem is on half range cosine series. So interval here 0 to 6, because for 6 maybe here 4 is there, so this value is not given. So 0 to 6 equate with 0 to L, so L equal to 6. This is one way how to decide L. Or another way is problem is on half range cosine series. So what is L? L is equal to number of observations, so take L equal to 6. Okay, now how we write its Fourier series? Fourier cosine series, that is given by y is equal to, here m is equal to 6. Okay, so y is equal to a0 by 2 plus a1 cos πx/6 plus a2 cos 2πx/6. Means we have to find only here a0 a1 and a2. Here a0 is equal to 2 times summation of y by 6, a1 is equal to 2 times summation of y into cos πx/6 upon 6, and a2 is equal to 2 times summation of y into cos 2πx/6 upon 6.
देखो हम पहले फॉर्मूले क्यों लिखते हैं A0 A1 A2, उससे हमें पता चलता है कि टेबल में हमें क्या क्या चाहिए। टेबल में हमें चाहिए समेशन ऑफ y, देन समेशन ऑफ y इंटू कॉस पाई एक्स बाई सिक्स, समेशन ऑफ y इंटू कॉस टू पाई एक्स बाई सिक्स। ओके, सो पाई एक्स बाई सिक्स एक कॉलम भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो हाउ वी राइट टेबल, सो टेबल इज दिस। ओके, टेबल इज दिस, दैट इज फर्स्ट कॉलम आएगा हमारा x, देन सेकंड कॉलम आएगा y। सो x की वैल्यूज गिवन ईयर 0 1 2 3 4 5, then respective values of y given right in front of x, that is 4 8 15 7 6 and 2। उसके बाद हमें पाई एक्स बाई सिक्स फाइंड करना है। ये नहीं किया तो भी चलता है। पाई एक्स बाई सिक्स मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो के लिए, एक्स इक्वल टू जीरो के लिए ये जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू दिस। एक्स इक्वल टू वन के लिए पाई बाई सिक्स होगा, एक्स इक्वल टू टू के लिए टू पाई बाई सिक्स, देन थ्री पाई बाई सिक्स, एक्स इक्वल टू फोर के लिए फोर पाई बाई सिक्स, एक्स इक्वल टू फाइव के लिए फाइव पाई बाई सिक्स। उसके बाद फॉर A1 वी वांट समेशन ऑफ y इंटू कॉस पाई एक्स बाई सिक्स। ओके, सो कॉस, देखो मोड कौन सा है अभी, कैलकुलेटर का मोड चाहिए रेडियन पे, बिकॉज x इज गिवन इन रेडियन, x इज नॉट गिवन इन डिग्री, सो यूज रेडियन मोड। रेडियन मोड में कैलकुलेटर शिफ्ट करो। रेडियन मोड में करने के बाद cos पाई एक्स बाई सिक्स फाइंड करो, तो पाई एक्स बाई सिक्स की वैल्यू जीरो है, मीन्स cos जीरो वन आएगा, उसको y ने मल्टीप्लाई किया फोर आया। उसके बाद पाई एक्स बाई सिक्स की पाई बाई सिक्स वैल्यू यहाँ पर पुट करो, cos पाई बाई सिक्स इंटू एट यहाँ पर आएगा, cos टू पाई बाई सिक्स इंटू 15 यहाँ पर लिखो, cos थ्री पाई बाई सिक्स जो भी आएगा उसको 7 ने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखो, cos फोर पाई बाई सिक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसको 7 ने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखो, और उसके एडिशन यहाँ पर लिखो। उसके बाद साइन टू पाई एक्स बाई सिक्स है, तो हियर टू है, बट पाई एक्स बाई सिक्स इज जीरो, सो cos जीरो इज वन इंटू फोर इज फोर। देन पाई एक्स बाई सिक्स की वैल्यू पाई बाई सिक्स है, उसको टू ने मल्टीप्लाई किया तो टू पाई बाई सिक्स हो जाएगा, cos टू पाई बाई सिक्स फाइंड करो, उसको एट ने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखो। देन सेम ईयर टू पाई बाई सिक्स से, सो पाई एक्स बाई सिक्स की वैल्यू है टू पाई बाई सिक्स, पाई एक्स बाई सिक्स, पाई एक्स बाई सिक्स पुट करो सिर्फ यहाँ पर इंटू टू, पाई एक्स बाई सिक्स इज टू पाई बाई सिक्स मीन्स फोर पाई बाई सिक्स, कॉस फोर पाई बाई सिक्स फाइंड करो, उसके वाई ने मल्टीप्लाई करो, देन कॉस टू इंटू थ्री दैट इज सिक्स पाई बाई सिक्स फाइंड करो, वाई ने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एडिशन लिखो। ये आपको पता चला होगा। और ये नहीं भी फाइंड किया तो चलता है, वाई देखो कैलकुलेटर पे कैसे टाइप करना है आपको, पहले वाई, वाई की वैल्यू फोर इंटू इंटू प्रेस करके और ब्रैकेट में कॉस ऑफ पाई एक्स, पाई मीन्स पाई, पाई शिफ्ट पाई यूज करो, एक्स की वैल्यू जीरो अपॉन सिक्स, ऐसा प्रेस करो, इक्वल प्रेस करो, यहाँ पर लिखो। ओके, so this is the summation of y cos pi x by 6 is this, summation of y cos 2 pi x by 6 is this. So a0 is 2 times summation of y जो भी आएगी यहाँ पर लिखो अपॉन 6 किया तो 14 मिलेगा। a1 के लिए सेम 2 टाइम्स समेशन ऑफ y cos pi x, दैट इज 13.6962 अपॉन 6 कैलकुलेट करो, a मिलेगा। एंड a2 के लिए सेम 2 टाइम्स समेशन ऑफ माइनस 8.5 दैट इज y इंटू कॉस टू पाई एक्स बाई सिक्स अपॉन सिक्स फाइंड किया तो 2.83 आएगा। एंड देयरफॉर फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू a0 बाई टू दैट इज 14 बाई टू मीन्स दिस इज 7 प्लस 4.57 cos pi x by 6 plus, I think this is minus check this, minus 8 2.83 into cos 2 pi x by 6. So this is the first two terms in a cosine series of given function, half range cosine series. And last problem is the turning moment t. This is very important problem again. The turning moment t units of the crankshaft of a steam engine is given for a series of values of the crank angle theta in degrees.
So theta in degree given a 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 and respective value of t given a. So theta is given in degree. So change mode of calculator. Now use degree mode. Question A, find the first four terms in a sine series. In the series of sine means half range sine series का problem है. To represent t. So instead of x and y, notation a theta and t here. And first four sine series given है. So half range sine series का formula is summation of bn sine n pi x by l. So t is equal to summation of bn sine pi x by l. ओके तो हमें फर्स्ट फोर टर्म्स चाहिए. तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी b1. व्हाट इज l हियर? थीटा इज गिवन इन डिग्री. सो हियर l इज इक्वल टू पाई बिकॉज पीरियड है 0 to 2 pi. Okay, 0 to 2 pi is 0 to pi. 0 to pi is interval here because 180 and 0 to pi equate with 0 to l. और मैंने पहले ही बताया आपको यदि थीटा इज गिवन इन डिग्री देन टेक l इज इक्वल टू पाई. सो l इक्वल टू पाई लिया तो यहाँ पर आएगा b1 साइन पाई पाई गेट कैंसिल. इंस्टेड ऑफ x नोटेशन है थीटा. सो b1 साइन थीटा प्लस b2 साइन 2 थीटा plus b3 sin 3 theta and plus b4 sin 4 theta. So we have to find b1, b2, b3, b4. So what is formula? b1 is equal to 2 times summation of b1 summation of y. Y is 2 times summation of y. Y is here t sin theta upon m. M is here 1, 2, 3, 4, 5, 6 because first and last value is same. So here M is equal to 6 here. Here M equal to 6. So B1 is equal to 2 times summation of t sin theta upon 6. Then B2 is equal to 2 times summation of t sin 2 theta upon 6. B3 is equal to 2 times summation of t sin 3 theta upon 6 and b4 is equal to 2 times summation of t into sin 4 theta upon 6. So for b1, b2, b3, b4 we want summation of t sin theta. So our in table our first column is theta. After theta second column is t. Okay, then for b1 we want t sin theta, so right here t sin theta. Then for b2 t sin 2 theta, t sin 2 theta. For b3 t sin 3 theta. For b4 t sin 4 theta. Okay, so to find this way table, in table write down all values of theta. Theta starts from 0 to 180, but for 180 again value of t given 0 is, so take theta from 0 to 150 and write down respective values of t here. Then find t into sin theta, t into sin 2 theta, t into sin 3 theta, t into sin 4 theta and write down summation of each column below that column. And after getting summation write b1. So b1 is 2 times summation of t sin theta, that is 23549.4 upon 6. ये कैलकुलेट किया तो ये मिलेगा. So this is approximate 7850. Okay, b2 is 2 times summation of t sin 2 theta is 4500 upon 6. After calculation this is 1500. And b3 is 2 times summation of 0 t sin 3 theta is 0 upon 6, that is 0, and same b4 is 0 because this is approximate value is 0. So b3 and b4 is 0 here. Okay, so therefore Fourier series how we write? T is equal to b1 sin theta, means equation 1. This is equation 1, and in 1 put all values b1, b2, b3, b4. So t is equal to b1. b1 is 7850 into sin theta plus b2 a 1500 into sin 2 theta. So this is the first four terms in a sine series because b3 and b4 are 0. Additional question here, also calculate t when theta is equal to 75 degrees. So put theta equal to 75 degree here, find t. So t is equal to 7850 into sine of 75 degree
plus 1500 into sine of 2 into 75, that is 150 degree. Calculate this. Answer is 8332. Okay, thank you.